Hey everyone, what's up? It's me Nabilshzd Zeeshuufam. If you're watching me for the first time, don't forget to hit the subscribe button and make sure that you hit the bell icon that you never miss new videos. So right now we are going to react on rank all 46 movies in the $1 billion club. $1 billion, you know. $1 billion from John Campea. First of all, I'm a really big fan of John Campea since AMC days. Who's John Campea? I'll let you know. Okay. First of all, because I'm a really big fan of him, I really like his vision about the movies, certain kind of movies and certain kind of things as well. And because of him, I used to know John Schnepp, who passed 2 years ago. Okay. I am a really big fan of him as well. So after the intro, we are going to talk in our mother language because I used to make videos in our mother language. So please, जांच पे आ जाओ. जांच पे आ जाने का. बाबा जांच पे आ रहा है. So basically वीडियो ये है कि जितनी भी $1 billion क्लब में आज तक मूवीज गई हैं, 46 मूवीज आज तक $1 billion क्लब में गई हैं. जैसे इंडिया का 100 करोड़ होता है ना, $100 करोड़ क्लब, 100 करोड़ का क्लब होता है. इसी $1 billion क्लब सबसे बड़ा क्लब है. सबसे एक्सक्लूसिव क्लब है. इसमें 46 मूवीज हैं. ब्रो योर इंग्लिश किधर गई? बोला तो अब अपनी जात पे आ गए हैं. मदर लैंग्वेज. I can speak in English, but you are not going to compete with me. Okay, so that's why. I can talk to English. I can speak in English. I can sleep in English. You can only sleep in English. Whatever. So, but the thing is that chuped your English. $1 billion club. $1 billion क्लब जो है ना, ये सबसे एक्सक्लूसिव क्लब है आफ्टर $2 billion क्लब. $2 billion क्लब में आई गेस अभी तक सिर्फ 6 फिल्में गई हैं. ये 7 भी नहीं, हाँ 7 फिल्में गई हैं आई गेस. और तो ये रैंक वीडियो है 46 जो सबसे बड़ी कमाई आज तक की हिस्ट्री की 64 मूवी जो सबसे बड़ी कमाई करने वाली है वो इस वीडियो में होने वाली है. 56 वीडियो. सॉरी 46. So let's further ado, might really jump into the video. You know, it's funny when you think about the practically century-long history of the movies. Only 46 films in movie history have ever joined the $1 billion club. It is probably the most exclusive club in all of movies. I mean, the $2 billion club is more exclusive, yes, but you get my point. So I thought it would be fun to not only visit all 46 members of this $1 billion club, but to rank them from worst to best. So let's not waste any more time and get right into it. At number 46, truly the worst film on this list, Transformers: Age of Extinction, which pulled in $1.104 billion. This 2014 entry of the Transformers franchise may not have Shia or Megan, but hey, it's got Mark Wahlberg, Stanley Tucci, Kelsey Grammer, Nicola Peltz, and even Jack Rayner. With lots of explosions and Michael Bayism action, this movie is very thin on plot or purpose, and it answers the age-old question, why is Grimlock there? The yellow one? Because. अच्छा, I don't like Transformer films. Transformers फिल्म जो होती है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है और जो बहुत ही फिजूल फिल्में लगती हैं मुझे. कभी मैं इनसे इंटू नहीं हो पाया. तुमने देखी है कभी ट्रांसफॉर्मर फिल्म? कौन सी देखी है? नाम नहीं मुझे याद. मुझे पता है वो उसके अंदर एक येलो वाला होता था, वो गाड़ियां भी बन जाते थे. वो सारी गाड़ियां बनते हैं. ये येलो रेड. तूने वो देखी होगी बग्बी कुछ इस तरह का नाम है. मैंने भी लास्ट वही देखी और उससे पहले एक इनकी आई थी टीम अप मूवी, वो मैंने बिल्कुल नहीं देखी थी. लास्ट फिल्म यही देखी थी जिसने $1 billion किया था. उसके बाद इनकी एक और यही वाली आई थी लेकिन वो मैंने देखी नहीं थी. तो मैं इतना इंटू नहीं हूँ ट्रांसफॉर्मर्स फिल्म में. At number 45, Alice in Wonderland, making $1.025 billion. This 2010 installment of the Tim Burton-Johnny Depp love affair and their collaboration was star-studded. Not only Johnny Depp, Mia Wasikowska, Helena Bonham Carter, Anne Hathaway, Crispin Glover, on and on. This was a film that many loved, admittedly, and joined the $1 billion club, but it was just so weak and poorly executed. Certainly one of the films that I like least on this list. Coming in at number 44, Star Wars: The Phantom Menace, making $1.027 billion. This 1999 highly anticipated return to the universe of Star Wars met with mixed reactions, with some people becoming brand new fans of a franchise of their parents and grandparents. Meanwhile, other people kind of complained that they thought George Lucas ruined their childhood. Taking the number 43 spot is Transformers: Dark of the Moon, making $1.123 billion. After spending the first 2 Transformers movies establishing a eternal love with the Megan Fox character, Shia LaBeouf's character falls in love with yet another smoking hot supermodel in Rosie Huntington-Whiteley.
Because winning the affection of smoking hot supermodel after smoking hot supermodel is just what happens to socially awkward guys, right? Yeah. Right? Yeah. Not quite as bad as Transformers Same Age of like Extinction, it's still quite a disappointment. At number 42, Star Wars Episode 9, The Rise of Skywalker, making $1.074 billion. This conclusion to the Skywalker saga, as they marketed it, ended up ending on a bit of a sour note instead of the high note they had promised. As the movie progressed, we watched J.J. Abrams, who did a wonderful job on The Force Awakens, retconned tons of his own story ideas, and ultimately make a lot of narrative choices that just made no sense. It's unfortunate because I like all the other Disney Star Wars films. This one just fell flat. At number 41, Pirates of the Caribbean on Stranger Tides, making $1.045 billion. This 2011 film was yet another disappointing installment of the Pirates franchise after the greatness of the first one, but it did carry with it some incredible talent firepower, with the likes of Hunger Games' Sam Claflin, Penelope Cruz as Angelica, and of course Ian McShane as Blackbeard. Coming in at number 40, Despicable Me 3, making $1.034 billion. I'm actually a bit of a sucker for the Despicable Me franchise. I was really charmed by the first one, and even more so by the second one. Unfortunately, while not a terrible movie, Despicable Me 3 just failed to capture that magic that you had in the first two films, and so it's a little bit lower on the list. Coming in at the number 39 spot, Pirates of the Caribbean Dead Man's Chest, making $1.066 billion. This 2006 film, the original sequel to the first Pirates movie, didn't exactly meet the high caliber expectations that the first film gave us, but hey, Bill Nighy as Davy Jones with those squid tentacle chin things going on. Listen, back in 2006, that was revolutionary CGI. At number 38, Iron Man 3, making $1.214 billion. Like Iron Man 2, this 2013 MCU film didn't quite live up to the expectations of the first Iron Man film, considered by many to be one of the great comic book movies. Still took an interesting approach with Tony dealing with post-traumatic stress disorder, or PTSD, from the events of the Avengers film. It also sports some incredible new faces to the MCU with Guy Pearce, Rebecca Hall, and Ben Kingsley, even though a lot of people didn't love the whole Mandarin. At number 37, Fate of the Furious, making $1.236 billion. This first installment of the Fast and Furious franchise, done without the presence of Paul Walker, was also unfortunately known as the film where Vin Diesel and Dwayne "The Rock" Johnson had their falling out. The two stars actually didn't shoot any of their scenes together this film, with Dwayne Johnson saying that they had fundamental differences in philosophies on how we approach movie making and collaborating. With the Fast and the Furious franchise being on a bit of a hot streak of fun and exciting movies, of course climaxing with the really heartfelt goodbye to Paul Walker in Fast and the Furious 7, Fate of the Furious was a bit of a step down, although it wasn't terrible. The movie still had all the high-speed, high-octane hijinks that one would expect from a Fast and the Furious movie, and delivered some decent entertainment. At number 36, the 2017 live-action version of Beauty and the Beast, taking in $1.263 billion. Despite the fact that this live-action version falls well short of the animated masterpiece, the fact of the matter is this movie still managed to deliver a decent amount of entertainment. Emma Watson and Dan Stevens did respectable jobs in the lead, with supporting cast members like Luke Evans and Josh Gad doing wonderful jobs. And by the way, Ewan McGregor's Lemire did a terrific job. Taking the number 35 spot, Jurassic World. अच्छा मुझे ना सारे मेमोरीज याद आ रही हैं मैं सिनेमा में कैसे कैसे देखी है जाके. Jurassic World caught the world by surprise. Not a lot of people thought that another Jurassic Park movie could do quite well, since the previous sequels had never really lived up to the first one either. But lo and behold, this one comes out, crushes the box office, and while it's not a great movie, it did give us a master class by Bryce Dallas Howard on how to outrun a T-Rex in high heels. At number 34, Minions का भी तीसरा पार्ट आ रहा है I guess. This spin-off of the Despicable Me films features the delightful little yellow Gru sidekicks, the Minions. Now, granted, they don't work quite as well on their own in the lead roles per se as they do in supporting roles in Despicable Me, but they're still charming. Give me these little yellow guys anytime. At number 33, Star Wars Episode 8, The Last Jedi, I have some problem with this film. $1.332 billion. Oh, good, an easy one with no controversy at all. This film was divisive, to say the least, with a lot of people having some really legitimate problems with it, and a lot of people loving it. I personally kind of enjoyed this film. Not good enough to make it into the upper tier of this list, but at least getting the number 33 spot. At number 32, Jurassic World Fallen Kingdom, making $1.308 billion.
This I time also around, recently Chris Pratt watched and Bryce Dallas Jurassic World. Howard लॉकडाउन trying में to बंदे ने help the करना क्या है, dinosaurs avoid मैंने extinction. पूरी फ्रेंचाइज देखी है. Again, you know, Clone Girl and all, Jurassic this World movie से was पहले actually की है? pretty good. I would go so Jurassic far as World to say 2 this है is ये. the best Jurassic Park movie since the original Jurassic Park film. Coming in number 3 की 31, शूटिंग शुरू The हुई थी जिस Hobbit, दिन An लॉकडाउन हुआ. Unexpected Journey, Hobbit. making ये भी बहुत अच्छी $1.017 सीरीज million. है. Mostly known as being a vastly inferior product Hobbit compared to series its भी बहुत predecessor, अच्छी The है. Lord of the Rings films, The Hobbit, An Unexpected Journey, with Martin Freeman now in the role of Bilbo, does a really admirable job of recapturing that charm of Middle-earth, of the Shire, of the dwarves. It's actually a pretty nice little film. At number 30, Captain Marvel, making $1.128 billion. ज्यादा मार्वल की It only फिल्में took आने the वाली हैं आगे. MCU 20-something films to finally have a female lead superhero movie in their universe, but they did it with Spoiler the billion-dollar alerts. winner, Captain Marvel. Made to answer the future question of, hey, who's that girl who rescued Tony Stark in space and brought him back to Earth in Endgame? Captain Marvel may not be one of the upper-tier MCU movies in terms of quality, but classic to MCU, it still delivers an entertaining experience. At number 29, The Dark Knight Rises, making $1.081 billion. ये सारी फिल्में मैंने थिएटर्स में In this देखी हुई है जाके. 2012 follow-up to मेमोरीज Christopher आती हैं. Nolan's The थिएटर Dark गोइंग Knight, one of एक्सपीरियंस the इज most a celebrated comic journey. book movies in history, we get The Dark Knight Rises. Look, I'll be honest, I think The Dark Knight Rises is pretty easily the weakest of हम लोग ये Christopher मूवी Nolan देखने Batman गए थे, films, एक but मिनट एक still स्टोरी a शेयर करता हूँ. हम लोग ये मूवी देखने गए थे, ईद पे आई थी ये, ठीक है, 2013 की ईद पे आई थी आई गेस, या काइंड ऑफ ईद पे ही आई थी. मैं था, मेरे दोस्त और मेरे कजन लोग थे, हम लोग लड़के लड़के गए थे सिर्फ देखने, क्योंकि ईद पे इतनी बड़ी फिल्म थी तो लड़कियां को इतना इंटरेस्ट नहीं होता कॉमिक बुक मूवीज में. हम लोग देखने गए थे फिल्म, तो इंटरवल में हम लोग पॉपकॉर्न लेने गए, तो उस थिएटर में अलाउड नहीं था खाना अंदर लेके जाना, नहीं था अलाउ. पता बाहर से कि वैसे नहीं, अपना उधर थिएटर का खरीद के भी आप अंदर नहीं बैठ के खा सकते, आपको कैफेटेरिया में खाना है भाई. तो हम लोगों ने चीजें ले ली, जैसे ही हम अंदर जाने लगे ना, उन्होंने बोला आप अंदर नहीं लेके जा सकते. अच्छा, जब हम चीजें ले रहे थे ना, एक लेडी खड़ी थी साथ हमारे, तो वो अंदर जब हम लेके चले गए थे ना, तो वो काउंटर पे हमारे पीछे गई थी, तो वो बाय कर रही थी अपनी चीजें. हम वापस आए, दुकान वाले को बोला कि वो हमें अंदर नहीं लेके जाने दे रहे स्नैक्स वगैरह, तो वो कहते आप इधर सेव कर जाए, लेकिन ये लास्ट शो है, जब आएंगे तो हमारी शॉप क्लोज हो चुकी होगी. तो लेडी तब तक ना निकल गई थी, मैं पीछे भागा लेट के. मैंने कहा एक्सक्यूज मी प्लीज, हमें ये अंदर नहीं लेके जाने दे रहे, तो क्या आप अपने बैग में स्टफ करके ले जाएंगे ये? तो उन्होंने कहा मैं रख तो लूंगी, लेकिन मेरे बैग में इतनी जगह नहीं है. फिर हमने ना उनको थोड़ी सी चीजें उनको पकड़ाई, बाकी एक एक टीन्स हमने अपनी पेंटों के अंदर घुसाए. एक एक टीन चिप्स वगैरह हमने उनके बैग में रख दी, और टीन्स वगैरह जो थे हमने अपनी जीन्स के अंदर घुसाए. यानी कि इतने बहुत फनी, ये जितनी मूवीज गुजरी है ना, सबके साथ एक कहानी है, ऐसे ही जर्नी होती है यार मूवी के साथ. तो काफी अच्छा मेमोरेबल एक्सपीरियंस है. तो मैं वेट कर रहा हूँ कब सिनेमास खुले. F9 देखनी है मुझे. वो तो अगले साल आनी है फिर भी. चलो बैक टू द वीडियो. Solid outing and a really nice conclusion to Nolan's Batman trilogy. At number 28, Zootopia, मुझे नहीं पता था इसने इतना बिजनेस किया. बहुत अच्छी फिल्म है ये भी. Probably the most surprising film making it into the billion-dollar club. Not a lot of people gave this 2016 animated film a lot of attention at first, but it quickly won over critics, audiences, families, adults. I love this koala. The story of Judy Hopps and Nick Wilde, of course, voiced by Goodwin and इतना स्लो बोलता था, लोग काम करके चले तो पहले टाइप पे ला बटन. At number 27, Furious 7, making $1.5 billion. A solid installment in its own right. Furious 7 stands as an लास्ट सीन में जब उनकी कारें ऐसे जाती हैं ना, मैं रोया था. Unfortunately, what a lot of people will of course remember the film by is the loss and tragedy of Paul Walker. I will always be amazed and impressed how the folks at Universal and James Wan managed to deal with that tragedy and come up with a way, a respectful way, to complete the film without Paul Walker and put it out. And of course, who will ever forget that ending scene as Vin and Paul drive off in their own separate ways? It was an incredible moment and just a really difficult situation managed with a lot of grace. At number 26, Frozen 2, making $1.45 billion. How do you top one of the most successful animated films of all time with Frozen? Well, I'm not sure, but they kind of figured out a way to do it, at least at the box office, as Frozen 2 even surpassed the box office performance of the first Frozen. And while it not be quite as good as the first Frozen, this movie was an awful lot of fun and somehow found a way to do a follow-up to Let It Go with their new song, Into the Unknown. In the number 25 spot, Aquaman, making $1.148 billion.
Fairly or unfairly, Aquaman has Unexpectedly often अच्छी been थी। the laughing stock of the superhero universe, but Unexpectedly not अच्छी anymore थी। with Jason Momoa playing Arthur Curry. नहीं, Director मुझे नहीं James एक्सपेक्ट था Wan कि found a डीसी way इतनी to अच्छी take this मूवी बना लेगा, पर underappreciated जेम्स वॉन पे superhero मेरा ट्रस्ट था character, जो merge डायरेक्टर it है with इस the मूवी का। personality of one Jason Momoa, and find a way to deliver not कुछ only a plot good holes time in थे। the theater for the audience, but a badly needed huge financial hit for the DCEU, making Aquaman the first DCEU film ever to join the $1 billion club. At number 24, Spider-Man Far From Home, making $1.131 billion. A solid, if not पूरे quite थिएटर में as मैंने good follow-up to 4 लोग Spider-Man बैठे थे Homecoming. उनमें बैठ के The देखी real थी। special thing about this क्योंकि movie is, of पाकिस्तान course, में it इतना is the मार्वल का first क्रेज movie नहीं जितना to मेरे look में है, at the लेकिन world वो of the 4 लोग जो आए थे ना, वो MCU after सारे the के सारे events of मार्वल Endgame. लवर्स थे। And I thought this film did a brilliant job of looking at the state of the world फर्स्ट शो and these मैं specific I always characters. watch Of first course, day Jake first show। Gyllenhaal did a terrific job as Quentin Beck, वो also known as लाहौर के Mysterio, सिनेमास and था, having someone वो like Samuel Jackson as Nick Fury in there gave it a really डिफेंस nice में कोई dimension अंदर as well. जाके At number 23, Finding Dory, इतना making $1.028 billion. पता नहीं कौन से टाउन Can का we just सिनेमा है take a वो। moment to acknowledge how impossible of a feat is to try to make a follow-up sequel to a beloved animated original? That was the task facing ये the भी बहुत crew अच्छी of फिल्म। Finding Dory. With the Finding Dory returning है ये। voice talents of Ellen DeGeneres and Albert Brooks, they may not have made this one quite as good as the first film, Finding Nemo. However, they did a pretty darn good job, and I think made a nice entry into the Pixar lineup. Coming in at number 22, Frozen, making $1.280 billion. Yes, I get it. We were all sick and tired of Let It Go coming out of the mouth of every 7-year-old and on every radio station. But the fact of the matter is, it was a damn good song. And you know what? Despite the fact that it's not cool to say, it was a damn good movie. Nobody foresaw the incredible financial success of this film, and to यार this day इतना has a टाइम गुजर major गया ना, ऐसा लग रहा है impact, कल देखे, particularly on लेकिन young टाइम girls. बहुत गुजर I'm चुका है telling you जब मैंने what, फर्स्ट टाइम go to देखी थी ये। Disneyland any day of the week, and you will count 1,000 little girls running around dressed like Anna and Elsa in the park. स्टिल मेरे छोटे कजन्स इस मूवी के आने के बाद पैदा हुए, वो भी फैन है इसके। Avengers Age of Ultron। Generally accepted as the weakest of the 4 But popular not for Avengers me, films, but not for me। this movie still stands on its own and is a worthy follow-up to that first Avengers movie. Yeah। And James Spader is the voice of Ultron? I mean, come on. At number 20, the 2019 live-action version of Aladdin that took in $1.050 billion. Most people, understandably, kind of scratch their head a little bit at the idea of a live-action Aladdin without Robin Williams being around. Also kind of confusing was Guy Ritchie directing. I love Guy Ritchie, but this just didn't seem like his kind of film. On top of that, Will Smith is the genie, but look, with everything stacked against this movie, somehow, some way, they found a way to make this really entertaining and a really good time. in two languages, मैंने 2 बार देखी, हिंदी में भी देखी, इंग्लिश में भी देखी। And trust me, इंग्लिश वाला वर्जन बहुत अच्छा था, हिंदी की डबिंग बहुत फर्क थी। Toy Story 4, making $1.073 billion. In the fourth installment that nobody asked for, because let's face it, most people thought Toy Story 3 was the perfect ending to the Toy Story trilogy, and it really was. Toy Story 4 ended up being that extra ending we didn't know we needed. Filled with all the heart and charm we've come to expect from a Toy Story film, this movie gave us a great completion to Woody's story. I agree, John! At number 18, Incredibles 2, making $1.242 billion. There are a lot of people who legitimately think that the original Incredibles film that came out all the way back in 2004 may be the best Pixar film ever. And we did have to wait 14 years for its sequel, but you know what? It was well worth the wait. The film picks up right at the end of the first Incredibles movie, and even though it's been almost a decade and a half, it felt like we never missed a beat. अच्छा, मैंने ना ये मूवी भी दोनों जुबानों में देखी है, और क्योंकि 2004 में जब इसका पहला पार्ट आया था इनक्रेडिबल, उस टाइम में इंग्लिश नहीं आती थी, ठीक है, क्योंकि छोटा बच्चा था मैं, आई गेस 10 साल का होगा, और हमारी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं, और हमें उस टाइम में पढ़ाई भी नहीं जाती थी इंग्लिश एज अ प्रोफेशनली, नहीं एज अ मेन लैंग्वेज हमें नहीं पढ़ाई जाती थी, ऐसे पढ़ाई जाती थी कि एज अ सब्जेक्ट जरूर था, लेकिन स्पोकन क्लासेस नहीं होती थी इसकी। तो मैंने जब वो देखी थी तब मैंने हिंदी में देखी थी, ठीक है, लेकिन बाद में मैंने इंग्लिश में भी देखी हुई थी। उस पहली वाली जो मूवी आई थी ना, उसकी ऑडियो डब दिया था शाहरुख खान ने, और शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने। मैंने अपने दूसरे चैनल पे एक वीडियो बनाई थी, वो वायरल हुई है शाहरुख खान और आर्यन खान के वॉइस डबिंग के ऊपर। अगर आप चाहें तो मेरे दूसरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। खैर, बैक टू द टॉपिक। तो जब इसका पार्ट 2 आया तो ना शाहरुख ने डबिंग की ना आर्यन ने। आर्यन तो खैर उस टाइम में बच्चा था जब ये आई थी, अब वो जवान हो चुका है तो वैसी आवाज नहीं निकाल सकता, चलो आर्यन का मैं मानता हूँ। शाहरुख ने डबिंग नहीं की, और हीरोइन की डबिंग इस बार काजल से करवाएगी, क्योंकि मेन कैरेक्टर का इस बार जो माँ था उसका मेन कैरेक्टर था। तो मेरा कहने का मकसद ये है
किस स्टार से जब डबिंग कराते हैं ना, तो वो मोस्टली स्टार अगली बार अवेलेबल नहीं होता सीक्वल के लिए। जैसे स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के लिए, होम कमिंग के लिए उन्होंने टाइगर श्रॉफ से डबिंग करवाई थी, लेकिन जब पार्ट 2 आया टाइगर श्रॉफ नहीं अवेलेबल था। उसी तरह क्या नाम है उसका, कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर जब आई थी, उसमें कैप्टन अमेरिका की डबिंग वरुण धवन से करवाएगी। इनके पास इतने वो पड़े हुए हैं यार, डबिंग आर्टिस्ट का काम डबिंग आर्टिस्ट ही कर सकता है। उनके पास इतने अच्छे हैं। मुझे सबसे बुरी डबिंग जो लगी है ना आज तक की हिस्ट्री में, मैं जानबूझ के डब्ड वीडियो मूवी 2 बार देख लेता हूँ। मैं एक बार इंग्लिश में देख लेता हूँ, एक बार हिंदी में देख लेता हूँ, इसीलिए कि मुझे देखना होता है कि हिंदी वाली डबिंग कितनी खराब है। क्योंकि जब मैं बचपन में देखता था ना हिंदी डबिंग, वो एक्यूरेट होती थी, बड़ा मजा आता था। लेकिन अब ये होता है कि उसको ज्यादा ना हिंदी टच देने की कोशिश की जाती है, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम। हर डायलॉग को ही अपने इंडिया के रिलेटेबल करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि पहले नहीं होता था। उससे ये होता है कि आपका जो चलो हिंदी में वर्ड बोलता हूँ, उससे आपका ज्ञान लिमिटेड हो जाता है, आपकी नॉलेज लिमिटेड हो जाती है। आप सिर्फ बॉलीवुड में ही रह जाते हो, आपको पता नहीं चलता वो हॉलीवुड के पंच चूज कर रहे होते हैं, लेकिन उनको बॉलीवुड का बना देते हैं। इसी तरह मुझे जो सबसे बुरी डबिंग लगती है ना आज तक की, वो है डेडपूल 2। डेडपूल 1 की डबिंग इतनी कोई अच्छी थी, ठीक है। डेडपूल 2 में मेन डबिंग आर्टिस्ट को चेंज करके उसको बना दिया गया, क्या नाम है वो दीपिका के हस्बैंड का क्या नाम है, दीपिका रणवीर सिंह ने डबिंग की थी, और बंधु की डबिंग की थी भुवन बाम ने। भुवन बाम अच्छा लगा था उस करेक्टर में, क्योंकि उसने चार्म रख लिया था फिल्म का, जो पुराना एसेंस था वो सेव कर लिया था। लेकिन वरुण कह रहा हूँ, क्या रणवीर सिंह एसेंस को नहीं रख पाया, क्या नाम है उसके, डेडपूल के। तो इस तरह डबिंग में काफी इश्यूज होते हैं। खैर, डबिंग वाली बात पे बिला वजह मैं चला गया, लेकिन मेरे जो मुझे याद है बात मैंने शेयर कर दी। बढ़ते हैं अगली 17वीं फिल्म की तरफ। At number 17, Rogue One, a Star Wars story, making $1.056 billion. One of the better Star Wars movies under the Disney regime, Rogue One was a solid entry in the franchise, taking a look at the events that lead up to the original Star Wars movie. And an ending that had everybody talking. ये जो सीन आया था ना फिल्म में, ये वाला सीन बिल्कुल एंडिंग सीन था ये। और जब ये आया था ना, क्योंकि ये उस मूवी का प्रीक्वल है जो आई थी 77 में। ये सारे एक्टर मर चुके हुए हैं क्योंकि ये जो फिल्म आई थी ना 77 में, उसका पिछला पार्ट है ये। अच्छा। ठीक है, जहां पे फिल्म एंड होती है ना, वहां से अगली फिल्म शुरू होती है, न्यू होप। तो ये सारे मर चुके हुए थे लोग, यानी कि रियल लाइफ में मर चुके हुए हैं ये एक्टर्स, नए एक्टर्स। और इनको जो मेन हीरोइन थी ना लेया, वो उसी साल मरी जिस साल ये फिल्म आनी थी। तो जब वो आई थी ना, गूस बम्स, रोने वाला हो गया था मैं। ये सीन तो वैसे ही बहुत एक्साइटेड सीन है, सही वाला डार्क वेडर दिखाया। ये जब तक थैनोस नहीं ना आया था, तब तक इसको हिस्ट्री का सबसे बड़ा विलन माना जाता रहा, यानी कि थैनोस से बड़ा विलन ये था। थैनोस ने आके सब कुछ चुटकी बजा दी, लेकिन ये अभी भी सबसे बड़ा विलन है। And cemented Darth Vader as the baddest mother ever in film. At number 16, Black Panther, making $1.346 billion. Being primarily known for its important cultural significance, some people overlook the fact that Black Panther was just a damn good comic book movie. So good that Black Panther actually became the first comic book film to be nominated for Best Picture at the Academy Awards. Personally, I didn't think Black Panther deserved to be nominated for Best Picture. Hell, I didn't even think it was the best comic book movie of the year. Instead of T'Challa, I thought a little character by the name of Miles Morales kind of deserved that spot. But make no mistake about it, Chadwick Boseman and Michael B. Jordan deliver incredible performances, really elevating this great mythology and exciting thrill ride of a film. It was just another big win for the MCU. At number 15, the 2019 CGI version of The Lion King, making $1.656 billion. This will be one of the more controversial entries, as there were a lot of people out there who really weren't able to connect with this version of The Lion King. But I gotta be true to myself here, folks. I adored this movie. Not nearly as good as the all-time great original Lion King animated film, which is, by the way, my all-time favorite animated film. But what Jon Favreau did with this Lion King, it was something like I never thought I would see on the big screen before. So although I know a lot of people, जैसा कि मैंने बोला था कि मेरी वीडियो वायरल गई थी शाहरुख खान के साथ, वो शाहरुख खान ने वो वीडियो जो मेरी वायरल गई थी ना, वो मैंने इसी टॉपिक पे बनाई थी। क्योंकि शाहरुख खान कर रहे थे सिम्बा के बाप का रोल इसमें डब, और क्या नाम है उसका, आर्यन खान सिम्बा का रोल डब कर रहे थे।
ठीक है। तो मैंने वीडियो बनाई थी क्योंकि पहले उसकी डबिंग कोई और, जब ट्रेलर रिलीज हो ट्रेलर की डबिंग लैदा होती है, फिर मूवी की डबिंग लैदा होती है। ऐसे होता है जब ट्रेलर आता है ना तो पहले इंडिया में भेजा जाता है कि इसकी डबिंग कर दो ट्रेलर की एक्ट्रेस के साथ, फिर उसकी डबिंग जब हो जाती है, फिर जब मूवी आ जाती है, क्योंकि मूवी कई बार ऐसा होता है कि मूवी एंडिंग तक बन ही रही होती है पोस्ट रिलीज होने तक। जैसे कि अगर तुमने एवेंजर 1 देखी ना, उसके एंड में जो शॉर्मा सीन है, जब वो देखिए एवेंजर्स एंड का शॉर्मा सीन, जब वो कहते हैं कि जब वो टोनी बेहोश हो जाता है फिर उठते कहता है मैंने सुना है इधर देयर इज अ शॉर्मा नियर बाय। इंडियन डबिंग में उसको कहते हैं तंदूरी चिकन खाने चलते हैं। वो बड़ा अजीब लगता है यार, सारा एसेंस ही खत्म हो जाता है। तो वो बोलता है कि शॉर्मा खाने जब जाते हैं ना, वो फिल्म की रिलीज होने से हफ्ता पहले शूट हुआ था। जो मैंने वीडियो बनाई थी, कबीर बेदी जो कि इंडिया के बहुत फेमस एक्टर भी रह चुके हैं और डबिंग आर्टिस्ट भी, उनकी आवाज दी गई थी पहले इसके लिए, क्या नाम है, मुफासा के लिए। तो ट्रेलर में जो उनकी आवाज थी ना वो बहुत उम्दा थी। अगर तू बोलता तुझे वो वीडियो दिखाऊं इसके बाद, चलो बाद में ना वो वीडियो दिखाता हूँ इसको, मैं अपनी वीडियो जो मैंने बनाई है जो वायरल हुई थी, और फिर मैं उस पर रिव्यू भी दूंगा क्योंकि उस पर बहुत कंट्रोवर्सी चली हुई है उस वीडियो में मेरी पे। अच्छा, तो उसमें यह था कि कबीर बेदी ने दी थी ट्रेलर में मुफासा की आवाज, ठीक है, लेकिन जब मूवी आई तो उसमें शाहरुख खान की आवाज, जब जिस दिन अनाउंस हुई थी ना कि शाहरुख खान मुफासा कर रहे हैं, तो मैंने उस दिन वीडियो बनाई थी कि मुझे नहीं लगता कि शाहरुख खान की आवाज उस पेश की है, क्योंकि कबीर बेदी साहब की आवाज बहुत भारी है, जो कि एक बाप की आवाज लगती है, समझ रहे हैं ना। शाहरुख खान की आवाज है सॉफ्ट, तो मुझे था कि वो मजा नहीं आएगा, तो मुझे था कि कबीर शाहरुख खान की आवाज उस लेवल की नहीं हो पाएगी, पेश नहीं दे पाएगी, और मैं काफी हद तक सही था। लेकिन मुझे ज्यादा डाउट था आर्यन खान के लिए। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, जब मैंने वो मूवी हिंदी डब में इसीलिए देखी, लाजमी देखी कि मैं देखूं कि जो मैंने वीडियो बनाई जो बहुत वायरल गई है उसकी वजह से मैंने देखी, तो मैंने जब देखी तो मुझे ठीक ठाक लगी। शाहरुख खान की आवाज मुझे बल्कि थोड़ी सी हल्की लगी, लेकिन आर्यन खान ने सिम्बा को जस्टिफाइड किया प्रॉपरली, और आर्यन खान की आवाज बिल्कुल शाहरुख खान की तरह लग रही थी, तो फर्क फील नहीं हो रहा था। लेकिन मुफासा के लिए कबीर बेदी साहब की आवाज इज अ नाइस ऑप्शन। सो बैक टू द वीडियो, कुछ बोलना चाहते हो? Agree with it. I got to put this Lion King at number 15. At number 14, Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2, making 1.3 पहली वो मूवी जिसके ट्रेलर देखते टाइम मैं रोया था। Endgame back in 2011, जब लास्ट में सीन आता है ना, लेट्स एंड दिस हाउ वी स्टार्ट से, मैं रो पड़ा था ट्रेलर देखते टाइम। Even somebody like myself, who is not a Potterhead at all, couldn't help but be completely wrapped up in मैं this. रोया था वाकई। तुम्हें पता है कि मुझे पता है, तुमने देखी भी है? मैंने साथ देखी 2003 से। मैं सिर्फ एक मूवी में रहा हूँ आज तक। भला कौन सी मूवी? तुम्हारा अपना ओपिनियन है, भला कौन सी? जो भी हो, मुझे क्या, तुम्हारा अपना ओपिनियन है। मैं बताता हूँ। नहीं, छोड़ू का क्या मतलब होता है? मजाक, छोड़ू क्या मतलब होता है? नहीं, छोड़ू का क्या? तुमने साथ देखी है फिल्में? ये वाली देखी। इसका पार्ट 3 जब आया था ना, तब फिल्म में नहीं लगती सिनेमा में। असल में पता है क्या? सुनो मैं क्यों नहीं रोता इस मैं स्टोरी इंग्लिश की समझ नहीं आती। मैं बताता हूं, जब इसका पार्ट 3 आया था ना, अब पाकिस्तान में फिल्में नहीं लगती थी, ठीक है। मैं इसकी फिल्म की सीडी बाय करने के लिए अकेला पहली दफा जिंदगी में रेक सिटी गया था, पहली दफा अकेला, डरते हुए गया था, 10 किलोमीटर दूर डरते हुए गया था, क्योंकि इतने लंबे सफर में मैंने कभी साइकिल नहीं चलाया था, क्योंकि मेन रोड आती है रास्ते में। और अगर तू बिलीव नहीं करेगा ना, मैं और मेरा दोस्त थे, हम लोग आधे घंटे तक, जिधर गोर में है ना इस टाइम, वहां पे खड़े, एक शॉप है, ठीक है, वहां पे खड़े सोचते रहते कि मेन रोड पे जाए कि नहीं जाए। वो लेवल था जब इसका पार्ट 3 आया था। उस टाइम से मैं देख रहा हूँ इनकी फिल्में, 7 से 7 देखी है मैंने। तो मेरा एक इमोशनल अटैचमेंट, जो ये मेरे साथ बड़े हुए हैं ये सारे कैरेक्टर। अच्छा, बड़े हुए हैं? हाँ जी, ये मेरे साथ पड़े हुए हैं, मेरे साथ बड़े हुए हैं, यानी कि मैं जब इनका पार्ट, मैं एज सेम है हम लोगों की, तो साथ से वेट होता था कि अगले साल हैरी पॉटर आएगी, 2 साल बाद हैरी पॉटर आएगी। तो मेरे लिए ये बहुत एक इमोशनल जर्नी थी, क्योंकि एंड हो रही थी। मैंने काफी सीजन देखे, यही पे इसकी मूवी नॉलेज खत्म हो जाती है। यही रीजन है कि इसको हॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज के लिए नहीं लेके आता मैं, क्योंकि ये फिर इस तरह की बकवास करता है। मेरे लिए मूवीज एक जर्नी है। मुझे गुस्सा आ गया तुम्हारी बात पे, क्योंकि मेरा इमोशनल अटैचमेंट जो मूवी के साथ है वो तुम नहीं समझ सकते। अच्छा ना भाई, सॉरी इस बात के लिए। मैंने 15 बार ट्रेलर देखा था इसका, और मैं रोया था फट के। भाई माजरा, सॉरी, मैं मेरे मुंह से निकल, अल्लाह की कसम मुंह से निकल गई, क्या बताऊं, मुझे माफ कर दो। मुझे घर से डांट पड़ी थी कि खाना खा लो, तुम एक ही ट्रेलर बार बार देख रहे हो। मेरे मुंह से निकल गई, मुझे माफ कर दो, मेरे मुंह से निकल गई। आगे लेट्स फर्दर अडू। It was touching. It was everything you wanted it to be in the final chapter. It's well touching. done. In the number 13 spot,
Titanic, making $2.194 billion. Coming out all the way back in 1997, it's sort of become the cool thing to hate on Titanic. But the fact of the matter is, James Cameron made one hell of a movie that was huge with the audience and huge at the box office. And oh, by the way, is tied for the record with most Oscar wins in history, winning 11 Academy Awards, including Best Picture and Best Director for James Cameron. ये सीन तो छोड़ ना, टाइटैनिक मैंने बचपन से देखी हुई, ये आई थी 2000 में, ठीक है, और ये काफी मशहूर लोक दास्तान बन गई थी, और ये हर ईद पे तो जियो न्यूज पे आती थी, हर ईद पे, रियल मूवी थी मतलब। अच्छा, हर ईद पे आती थी, सारा बचपन देखता रहा, बड़े होकर पता चला कि फिल्म कटी हुई दिखाते रहे हमें। बड़ा दुख हुआ था, जो मेरी बात समझ गए वो समझ गए हैं। बड़ा दुख हुआ था जब पता चला था कि हमें कटिंग फिल्म दिखाते रहे हैं। फिल्म 2 घंटे 50 मिनट की थी, हमें 2 घंटे 40 मिनट की दिखाते रहे सारी जिंदगी। मैं सोचता था हमेशा इस सीन में मुझे घर वाले पानी लेने क्यों भेजते हैं। जैसे ही हीरो का नाम भूल गया मैं, दिमाग से निकल गया, जैसे ही इसको वो कहती है कि मेरी तस्वीर बनाओ, घर वाले ये क्यों कहते हैं जो पानी लेके आओ। हमेशा पेंटिंग मिस हुई है मेरी, और इसको अभी भी नहीं, इसने तो अभी भी नहीं देखी होगी। मुझे पता, मैंने पूरी मूवी देखी और एक पेंटिंग देखी है। कौन सी पेंटिंग? नहीं देखी। मेरे फ्लैशबैक में ना लेके जाओ मुझे, अभी जान के लेके जाएगा। मैंने आज से 10 साल पहले देखी हुई है मूवी। मैंने कई बार देखी है। Skyfall, making $1.108 billion. The highest इसकी grossing स्टोरी सुनाऊंगा film मैं। of all time. It's also considered by many to be the best तुमने Daniel मेरा Craig Bond कैसा film to चलेगा? date, as मुझे it shows गुस्सा off चढ़ा all दिया the तुमने। suaveness of a Roger Moore Bond, as well as the बाद में बताना, badassery of a मुझे Sean बताना। Connery Bond. हम लोग स्काईफॉल देखने गए सिनेमा में। अच्छा, असल में हम लोग गए थे देखने, फास्ट फॉरवर्ड की। असल में हम लोग देखने गए थे, क्या नाम है उसका, सन ऑफ सरदार, ठीक है, ईद का वीकेंड था, सन ऑफ सरदार देखने गए। दोस्त मेरा, मैं बाइक पार्क कर रहा था, दोस्त मेरा भाग के लाइन में लग के टिकट लेके हम लोग बैठ के देखने, मूवी देखने बैठे हैं। फिल्म शुरू हुई है, क्या नाम है, जेम्स बॉन्ड भाग रहा है स्क्रीन पे। हमने टिकट ली है स्काईफॉल की, हमने टिकट ली है सन ऑफ सरदार की, इंडियन मूवी की, और भाग ये रहा है। मैंने कहा यार टिकट गलत तो नहीं ले ली? कहता नहीं नहीं ट्रेलर आया है। अच्छा 5 मिनट हो गए वो भागी जा रहा है। फिर मैंने गलत टिकट तो नहीं ले ली? नहीं नहीं ट्रेलर आया है। फिर 5 मिनट हो गए भागी जा रहा है। भागी जाता है वो स्टार्टिंग चेजिंग सीन से शुरू होती है ना मूवी, तो एक विलन को पकड़ रहा होता है। अच्छा 10 मिनट तक भागता है बस। वो काफी ट्रेन के ऊपर गिरता है, ट्रेन से गिरता है, काफी फिल्मी सीन था वो। तो मैंने कहा यार जरा टिकट तो दिखा। टिकट फिर उसने दिखाई तो वो स्काईफॉल की टिकट लेके बैठे हुए थे हम लोग देखने। तो मुझे बिल्कुल मजा नहीं आ रहा था फिल्म देखने में, क्योंकि मैं कॉमेडी फिल्म इरादा नहीं था। हालांकि बहुत ये बॉन्ड फिल्में बहुत अच्छी होती हैं, तो मुझे ना मजा नहीं आ रहा था। फिर मैंने अपने एक दोस्त को कॉल की, जो मेरे ना काफी सारे दोस्त हैं इस फील्ड में, क्योंकि मैं बहुत बड़ा लवर हूँ, मूवी लवर हूँ, तो मेरे दोस्त भी उस टाइप के हैं। तो मेरे एक दोस्त फैमिली है, वो मूवीज बाय करती है, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा यार ऐसे ऐसे हुआ है, तो क्या कर सकते हैं हम? पता कौन सी मूवी देख रहे? मैं कहा सन ऑफ सरदार। कहता अरे वो तो हमने लगाई, वो तुझे फ्री दिखाता हूँ, रुक 1 मिनट में उधर ही आ रहा हूँ। वो आया, हम उसी थिएटर में बैठे रहे, हमें उठाया भी नहीं गया। हमने अगली टिकट, उसी टिकट में हमने सन ऑफ सरदार भी देखी, ये भी देखी एक टिकट में। मजे हो गए। इसी के साथ आगे चलते हैं। Here's hoping No Time to Die gives him a proper send-off. At No number Time to 11, Die. Star Wars Episode 7, The Force Awakens, making $2.068 billion. Force Awakens In 2015, we we are got to home do to it. something we thought we'd never get to do again. Go back and visit the Star Wars universe. J.J. Abrams introduced us to a thrilling and exciting ride of a movie, giving us brand new characters as well as the classic ones. Although it would have been nice to have a little bit more Luke Skywalker. To this day, it stands as one of the very few members of the elusive $2 billion club. And now we move into the top 10. At the number 10 spot, Toy Story 3, making $1.066 billion. Arguably the most perfect ending to a franchise in cinematic history. Yes, Toy Story 4 was a very nice follow-up film, but it was Toy Story 3, which became only the 3rd animated film in history to actually be nominated for Best Picture at the Academy Awards, that gave us the emotional send-off we as adults had grown up waiting for. The incinerator scene where they're holding hands, Andy passing off his toy to a new kid. Oh. At number 9, Jurassic Park, making $1.032 billion.
Now, granted, Jurassic Park didn't make the $1 billion club in its initial theatrical release, but it eventually got there, so it counts. Simply put, an absolute classic, and it was the first time that I, as a film fan, sat in the theater and was truly wowed by what I was seeing on screen. Listen, when we, as the audience, saw those dinosaurs, we were all like Sam Neill's Dr. Grant going, a truly wonderful film and easily the best of the Jurassic franchise. At number 8, Avengers Endgame, making $2.797 billion, a new record. Avengers Endgame was both a wonderful sequel to Avengers Infinity War, but also the summation of a 10-year, 20-plus film build-up in the MCU. Breaking the almost decade-long reign of Avatar as the all-time box office champ, this movie, if nothing else, will absolutely cement that Kevin Feige, if there ever is a Hall of Fame for Hollywood producers, will absolutely be in it. At number 7, Joker, making $1.074 billion. Some people may have been a little bit apprehensive when they heard that a Joker movie was coming that wasn't connected to Batman. That's the reason why I don't watch. Immediately wiped away. Joaquin Phoenix delivered an Oscar-winning performance, being the second actor in history to win an Academy Award for playing the Joker, the first obviously being Heath Ledger. And the film itself became the second comic book film in a row to be nominated for Best Picture at the Academy Awards. Yeah, there was a little bit of controversy surrounding the film, but don't let that distract you. Joker was a fantastic movie. At number 6, Avatar, making $2.790 billion. For nearly a decade, Avatar was the king of the all-time box office. An accomplishment made even more impressive when you consider that most billion-dollar club films have opening weekends of $150 or more million. Avatar only opened with $77 million on its opening weekend, and yet went on to become a pop cultural phenomenon. Like James Cameron's other film on this list, Titanic, it sort of became the cool thing to start hating on this film, but Avatar was a remarkable accomplishment. Getting into the top 5, at number 5, Captain America Civil War, making $1.153 billion. Captain America Civil War, or as some people refer to it as Avengers 2.5, was an absolute amazing accomplishment on the big screen. Adapting one of the most beloved storylines from the comics, Civil War, heavily adapting it for the big screen, it pits the philosophical differences involved in both Captain America and Tony Stark as they divide over the issue of should they sign the Sokovia Accords. I myself was a Team Cap guy. Now, by the end of the film, even Tony was Team Cap, so that should put an end to that debate. And let's not forget that on top of bringing in all these beloved characters from the MCU, it also introduced us to two key characters. It introduced us to T'Challa, Black Panther, and of course, this universe's version of Peter Parker's Spider-Man. At number 4, Avengers Infinity War at $2.048 billion. While all the films in the MCU are valid movies that stand on their own, it's fair to say that it was all build up to the big culmination, at least the start of it, with Avengers Infinity War. Bringing in the long-threatened Thanos, the character became probably the best villain they've ever had in the MCU. Filled with incredible action and incredible moments, Infinity War delivers one of the most ballsy endings ever in a comic book movie. A movie where the bad guy not wins. In comic book at number movie, 3, history The Dark Knight at $1.004 billion. Considered by many to possibly be the greatest comic book film of all time. Not me personally, I think that's for another film we'll mention in a minute. Christopher Nolan gave us a film that bent our understanding of a comic book film. It kind of transcended different genres, being, yes, a comic book film, but also a legitimate crime thriller. It's hard to believe it's almost been 12 years since this film came out, but it still stands today as one of the most celebrated in the genre. Adding on top of that, the distinction of being the first comic book film to win a major Academy Award when Heath Ledger won for Best Supporting Actor for The Joker. At number 2, The Avengers at $1.518 billion. While The Avengers was not the first film in the MCU, it became the movie that embodied the template of what the MCU would become. Joss Whedon did the seemingly impossible, bringing together characters like Captain America, Iron Man, Hulk, Thor, Black Widow, Hawkeye, Loki, all in one movie, giving them each equal screen time and giving none importance over the other. The movie was balanced, thrilling, had great visual effects, great character moments, and every single one of the performances was right on the mark. It's an issue that's clearly up for debate, but for my money, Avengers is not only the best comic book movie ever made, it's probably the most important one too. And now we come to number 1,
The Lord of the Rings, Return of the King, at $1.142 billion. Return of the King doesn't just reign supreme on this billion-dollar club list. It is also one of the greatest cinematic achievements in film history. No film in Oscar history has ever won more Academy Awards than Return of the King. It won 11 awards, sharing that honor with 1959's Ben-Hur and 1997's Titanic, including the big awards of Best Picture, Best Director, Best Screenplay, Best Visual Effects, Best Music, Best Costume, Best Editing, on and on and on. Bringing any literary classic to life is a daunting task, but Peter Jackson did it with utter perfection. And maybe it's true that the movie had 17 different endings, but you know what? To me, they were all perfect. Lord of the Rings, Return of the King, you bow to no one. So there you have it, guys, our ranking of the 46 members of the $1 Billion Club. Here's hoping we have some new members to join that club in the near future. Maybe not in 2020, but hopefully there's a lot of good contenders in 2021. Let's see what happens. But clearly, guys, all of our lists are going to look different, and I want to know how your list would look different from mine. So jump on down to the comment section and leave your thoughts there. तो तुम बताओ तुम्हारे लिए लिस्ट कैसी है? ये इसने जो अपनी $1 billion यानी कि टोटल लिस्ट बनाई है, उसमें तुम्हारे हिसाब से रैंकिंग में मूवीज वैसे ही इतना इंटरेस्टेड होता नहीं है हॉलीवुड फिल्मों में. मुझे तो वैसे ओवरऑल अच्छी लगी, सारी लिस्ट एकदम एक्यूरेट है, लेकिन मेरे लिए एज ऑफ अल्ट्रॉन को थोड़ा सा ऊपर रखना चाहिए था. एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी को हम लोग बहुत ठंडा ले लेते हैं जो मार्वल फैंस हैं. इतना पागल इंसान है क्या? अच्छा मुझसे पूछते मुझे पता था इसको जवाब ही नहीं पता. चल तू चल बोल. नहीं मैं पहले बात पर आऊंगा. मैं इसीलिए तुझसे पूछ रहा था कि चुप बैठा हूँ. मुझसे पूछ रहा है. अच्छा पहले तुम बताओ. अच्छा तुम्हें कैसे बात करके खुद ही जवाब देके खुद ही अपने में बात ले आया कि इसको तो पता नहीं है. मैं बता रहा हूं मेरे हिसाब से जो बोल रहा हूँ थोड़ा लिस्ट में ऊपर होना चाहिए था, लेकिन वो लिस्ट में ऊपर नहीं है. हमारा बजट कम है, इसलिए हम प्लास्टिक कुर्सी में बैठे. ये रिंग लाइट है, वो सब क्या जिंदगी में जान. मतलब हम यहाँ पे क्या मैं आलू खेलने के लिए 26 मिनट की वीडियो दिखाई है मुझे. अच्छा चल तू बोल. चल फिर तू चल बोल, कौन सी फिल्म तेरे हिसाब से लिस्ट में ऊपर नीचे होनी चाहिए? एवेंजर्स एंड गेम को थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए था. 8वें नंबर पे है. इससे भी ऊपर होना चाहिए, 5वें नंबर तक आना चाहिए था. अच्छा और मेरे पॉइंट ऑफ सही है, ठीक है तुम्हारा पॉइंट. उसके बाद जो मैंने मूवी देखी थी क्या नाम कहते हैं उसका, असल में पता है तुमने नाम दिया था 2.0 का, सिविल वॉर. असल में पता है मैं तुझे बताता हूँ, मैंने तुझसे जब पूछा और मैं अपने ऊपर क्यों ले गया, असल में ना जज वही कर सकता है जिसने सारी फिल्में देखी हो. तुमने सारी नहीं देखी. जिनका देखा है उनको तो मैं बता ऐसे नहीं ना हो सकता. नहीं. अब तुम देखो क्लास में 10 ज्यादातर देखी, सुनो ज्यादातर की बात में क्लास में 10 बच्चे हैं, ठीक है. अब तुमने उनमें से 8 के पेपर चेक कर लिए, 2 के पेपर नहीं चेक किए, लेकिन उनको तुमने फेल कर दिया क्योंकि तुमने पेपर ही नहीं चेक किए. ऐसे नहीं ना हो सकता. नाइंसाफी है. तो क्या कह रहा हूँ. हाँ नहीं तुम अपनी जगह से हो, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी सही है अपनी जगह पे, क्योंकि जो चीज आपने देखी नहीं आप उसके लिए जजमेंट नहीं दे सकते. तो इसमें से कई फिल्में जो तुमने नहीं देखी हुई, लेकिन मैंने सारी की सारी फिल्में देखी हुई है. हाँ चलो और कौन सी. एक तो एवेंजर्स एंड गेम को ऊपर होना चाहिए था, और मेरे हिसाब से जो है क्या नाम है उसको ज्यादा ऊपर होना चाहिए था एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन को, क्योंकि एज ऑफ अल्ट्रॉन को हम लोग बहुत इजीली ले जाते हैं कि वो इतनी अच्छी फिल्म नहीं थी, इतनी तगड़ी फिल्म नहीं थी, लेकिन फॉर मी इज वन ऑफ द बेस्ट फिल्म. अवेंजर एक फिल्म जो इतने पीक पे गई होती है, एवेंजर्स इतने पीक पे गई थी, उसके बाद उसी तरह की दूसरी फिल्म बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. लेकिन उस डायरेक्टर ने क्या नाम है उसका जॉश वीडन ने इसको डायरेक्ट किया था, और मेरे हिसाब से जॉश वीडन ने अपना काम बहुत उम्दा तरीके से किया है. और अभी न्यूज भी आ रही है कि जॉश वीडन सपोज कर रहे हैं लोग कि फैंटास्टिक 4 को डायरेक्ट करेंगे. इन्होंने एक्चुअली में अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के बाद एमसीयू को लेफ्ट कर दिया था, जैसे रूसो ब्रदर्स ने अवेंजर्स एंड गेम के बाद लेफ्ट कर दिया, क्योंकि इतने बड़े बजट की जब फिल्म बनती है ना, इतने ज्यादा एक्टर्स को जब मैनेज करना पड़ता है, डायरेक्टर स्पॉइल्ड हो जाता है, डायरेक्टर फारग हो जाता है दिमाग से, इतने एक्टर्स को मैनेज करके उसको ब्रेक चाहिए होता है. तो मेरे हिसाब से जॉश वीडन का ब्रेक पूरा हो चुका हुआ है. रूसो ब्रदर्स थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हैं. अभी रूसो ब्रदर्स की नई मूवी आई है द एक्सट्रैक्शन, नेटफ्लिक्स पे, वो भी देखनी है मैंने. अभी मैं इसको बोल रहा हूँ कि इकट्ठे देख लेते हैं, कहता है नहीं मैं अपनी खैर. सो गाइस दैट्स इट फॉर नाउ. दिस इज आवर रिएक्शन. इफ यू लाइक वाचिंग आवर रिएक्शन प्लीज गिव अस अ बिग फैट thumbs up. If you want to suggest us something or you have any question, please write that in comment section below. You can also follow me on Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, TikTok, Likey. Basically I'm everywhere. Simply search NABLSH and you will find me. You can also find him ZEESHUUFM and you can find me. Basically I'm everywhere. You can also click here to subscribe our YouTube channel. यहाँ पे हमारे चैनल के आइकन्स आ गए हैं, यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे वीडियोस आ गई, देखें, एंजॉय करें. स्टे ब्लेस्ड, स्टे एट योर होम, स्टे सेफ, बाय, टेक केयर, पीस.